डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वोलार्ड मेथड। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। जैसा आपको पता है कि वोलार्ड मेथड में हम एक टाइट्रेशन कर रहे थे। किसकी टाइट्रेशन कर रहे थे? डिफरेंट डिफरेंट कौन से क्लोराइड और इस तरह के ब्रोमाइड्स का एस्टिमेशन कर रहे थे, जिसमें हम बैक टाइट्रेशन कर रहे थे। ओके, और उसका प्रिंसिपल आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जिसमें वोलार्ड मेथड में AgCl का प्रेसिपिटेशन बन रहा था। AgCl का प्रेसिपिटेशन बन रहा था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो AgCl है वो AgCl थोड़ा सा वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होता है तो मतलब प्रेसिपिटेशन परफेक्टली नहीं बनता। परफेक्टली नहीं बनेगा मींस उससे क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट शार्प नहीं होगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। उस जो सिचुएशन या जो प्रॉब्लम आई थी इन द वोलार्ड मेथड मींस सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ AgCl precipitation, that problem is resolved in the Vollard method. Okay, try to understand means modified Vollard method is the method for precipitation titration as we have discussed. इसका प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड इज as similar as Vollard's method, that is as good as, but at the same time the limitation of Vollard's method, that is AgCl precipitate have slightly soluble in titration condition. That's why modified Vollard method is applied in what, in that chloroform or nitrobenzene added to prevent solubilization of AgCl precipitation. Means how during the reaction or during the principle we have studied the AgCl formed during on the addition of AgNO3 in KCl estimation, means AgCl formation on the addition of chloroform or nitrobenzene form a layer around the AgCl precipitation, and AgCl precipitation have a layer of that chloroform. That's why it is not soluble in particular aqueous condition. Means what will happen if there is no precipitation, no solubilization of that AgCl, means that precipitation of AgCl which give the sharp end point as compared to Vollard method. It is very simple. Okay, how? Now come to the procedure. Procedure is as good as similarly of Vollard method. How it is? First one, step one, as we have discussed, standardization of AgNO3 solution as per Vollard's method, means that is as good as बिल्कुल similar form में. Okay, come to the step second. Step second has slightly difference. Sample of KCl, that is 0.1 10 ml in a conical flask. Similarly, excess amount of AgNO3 standardized solution, that is this one. Okay, that is standardized one. As we have added alum indicator similarly, but at the next chloroform and nitrobenzene is added, or nitrobenzene. Either we can add chloroform or we can add nitrobenzene. After adding, or these are in where? Conical flask. In a conical flask. Okay, these are present in conical flask. Then titrate with 0.1 K HCN potassium thiocyanate solution, that is as we have discussed, back titration. And at the point of end point, what will be happen? Red color of what thiocyanate along with the alum इंडिकेटर. ओके, मींस कंप्लीट जो इसका प्रिंसिपल है वो सेम ही है. ओनली एंड ओनली यहाँ पे जो हम क्लोरोफॉर्म या नाइट्रोबेंजीन ऐड कर रहे हैं, दैट फॉर्म द लेयर अराउंड द AgCl precipitation. This is all about Vollard method as well as modified Vollard method. Okay.